Hello everyone, hope you all are doing great. This video is going to be about myasthenia gravis. Okay, so first we'll see the name. Okay, myasthenia and gravis. It is a Greek word. So maya meaning muscle, myo. Asthenia meaning weakness, and gravis meaning severe. So by the name itself, we can say that myasthenia gravis is a disease of severe muscle weakness, right? Next, another additional information is that Amitabh Bachchan sir is suffering from myasthenia gravis from the last 30 years. Just a real life example. Now we'll get into the actual physiology. Okay, so we're done with the definition. Now क्लिनिकल फीचर्स. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या साइंस आते हैं पेशेंट में. सो वील अंडरस्टैंड इट इन अ स्टोरी का फॉर्म. ओके, सपोज एज इफ यू आर रीडिंग या राइटिंग, तो सडनली योर आईज विल स्टार्ट टू ड्रूप. ओके, तुमको दो दो दिखने लगेंगे, डिप्लोपिया, डबल विजन होगा. देन व्हाट कैन हैपन इज, सपोज यू आर ब्रशिंग योर टीथ, तो यू विल फील एज इफ यू आर डूइंग समथिंग अ वेरी हेवी टास्क. You're combing your hair, it will feel like you are lifting some heavy equipment. Okay, so I say small tasks will also feel like as if you're doing something very extraordinarily great or something aisa. So clinical features of myasthenia gravis mainly ptosis, diplopia. Speech जो है वो slur करेगी. Okay, so मतलब and you know what the strange part is, कि as soon as if you will take some rest, you will relax थोड़ा सा, you will feel as if nothing had happened only. You will feel absolutely normal. Okay, so this is the strange part of myasthenia gravis, that after rest you feel absolutely normal. Okay, so hope you have got myasthenia gravis, उसके clinical features. Okay, now we'll get into actual physiology. प्रॉब्लम हो क्या रही है. Now अब तक समझा होगा कि there is some lack of nerve muscle coordination which is happening. इसकी वजह से there is some kind of malfunctioning happening basically. So myasthenia gravis, actual problem, it is a failure of neuromuscular transmission. But where is the failure actually occurring? Okay, so in my NMJ का video, this was your nerve and this is your muscle. प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम होगी, सी दिस इज द साइनैप्स. ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को साइनैप्स से वी कैन कोरिलेट, एंड ये नर्व विल बी द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस विल बी अ पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन. तो इन मायस्थेनिया ग्रेविस ये जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स थे, इनमें समथिंग इज गोइंग टू अकर. ओके, सो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स, वेयर आर दे लोकेटेड? This was the synapse, so this is your postsynaptic membrane. So myasthenia gravis will always occur in your postsynaptic membrane, will never occur in your presynaptic membrane. Presynaptic membrane में अगर कुछ changes हो रहा है, so that will be mainly due to Lambert-Eaton syndrome, which is not that important. Myasthenia gravis is a very high yield topic. So myasthenia gravis is 100% post-synaptic. Okay. So what is actually going to happen? Okay, अब तक समझा कि acetylcholine receptors के साथ something is going to happen. But what's going to happen is कि okay, so this was your skeletal muscle. Okay, I've drawn your. This is your skeletal muscle and ये तुम्हारे acetylcholine के receptors है, which was serving dual function, meaning acetylcholine will bind your, and then these were also ligand gated sodium channel, जिससे सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, जिसकी वजह से मसल में लोकल पोटेंशियल जनरेट हो रही थी, राइट. बट अब क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर्स है उसके अगेंस्ट देयर विल बी एंटीबॉडीज जनरेटेड. Antibodies will be generated against the acetylcholine receptors. So अगर एंटीबॉडीज जनरेट हो गए, सो दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डिस्ट्रॉय द रिसेप्टर एंड दे विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये मसल की मेम्ब्रेन को भी. ओके, तो
what is the main problem now? Now we have come to the conclusion कि anti-acetylcholine receptor antibodies are generated. Okay, so अब तक we have got कि acetylcholine receptors के against में antibodies will be generated. और कौन कौन से चीज़ों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज कैन बी जनरेटेड? इट कैन बी योर एंटी मस्क एंटीबॉडीज और एंटी LRP4 एंटीबॉडीज. बेसिकली व्हाट इज मस्क? मस्क इज मसल स्पेसिफिक काइनेज. बेसिकली ये क्या करता है, ये जो रिसेप्टर्स है हमारे ऑन द स्केलेटल मसल के मेम्ब्रेन, उनको मस्क विल गिव द सिग्नल. मतलब ये रिसेप्टर्स हाउ हैव दे कम हियर ओनली? इट इज़ ड्यू टू द सिग्नलिंग डन बाय मस्क. मस्क ने उनको ऑर्डर दिया था कि यू हैव टू accumulate over here, you have to be positioned over here. And मस्क को ये सिग्नल कौन दे रहा है? LRP4 along with agrin. Not so important as of now, but just you can remember कि autoimmune causes में एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ सकती हैं, मस्क के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ सकती हैं, एंड LRP4 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ सकती है. राइट, ये हो गया ऑटो इम्यून कॉजेज. दूसरा कॉज हो सकता है, मतलब यू आर गिविंग इट फ्रॉम आउटसाइड. सो वो ड्रग है कुरारी. इट इज कॉल्ड एज अ फार्माकोलॉजिकल मिमिकर ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस बिकॉज ये भी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर का इट विल एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. बेसिकली ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर आके इट विल कम एंड सिट ओवर इट, not allowing acetylcholine to bind to the acetylcholine receptor. So curare is a competitive postsynaptic acetylcholine receptor blocker. Okay, so now we have known the cause. कि cause basically अगर एक ही remember करना है तो acetylcholine receptors पे का destruction is the cause कि myasthenia gravis is occurring. So in order to eradicate the cause, what we can do? We should basically preserve the receptors, but the problem is कि we don't have any drug today to repair the acetylcholine का receptors. We don't have any drug जो कि इनको repair कर दे if they are destroyed, जो कि इनको regenerate कर दे if they are destroyed, और इधर जो ब्लॉक कर दे एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज फ्रॉम बाइंडिंग ओवर देयर, बाइंडिंग को ही ब्लॉक कर दे एंटीबॉडीज की. देयर इज नो ड्रग अवेलेबल. सो नाउ ओके, सो प्रॉब्लम तो समझा, बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू eradicate the problem. So what we can do is, see, ये तुम्हारा मसल के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स है. सपोज इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ गई एंड इसके भी अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ गई. सो इनसे तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा. सो ये दीज टू रिसेप्टर्स आर स्टिल लेफ्ट. इन पे एंटीबॉडी का अटैक नहीं हुआ है. ओके, सो इन पे एसिटिलकोलिन बाइंड किया एंड सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया. बट अभी हमको इनसे ही मैक्सिमम आउटपुट वी हैव टू मेक आउट ऑफ देम ओनली. तो ओके, सो बी लिसन केयरफुली. यहाँ पे से सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, एसिटिलकोलिन इज बाउंड ओवर योर, बट अब क्या है कि दे विल थिंक ऑफ देयर लिमिटेड रीजन का वर्क कि सिंस सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, नाउ एसिटिलकोलिन को दे विल पुट इट इनटू दिस पिट एंड एसिटिलकोलिन का क्लीवेज होएगा बाय एसिटिलकोलिन एस्टरेज. ओके, क्लीवेज हो जाएगा. बट पहले तो सी वी वर हैविंग दिस ऑल दी 4 रिसेप्टर्स, बट नाउ तो वी आर हैविंग ओनली 2. सो ये 2 में ही वी हैव टू मेक द मैक्सिमम आउटपुट. तो सोडियम का इन्फ्लक्स कंटिन्यू रहे और एसिटिलकोलिन का क्लीवेज ना हो. सो हेंस वी विल गिव देम ड्रग्स विच विल बी एसिटिलकोलिन एस्टरेज का इनहिबिटर. एसिटिलकोलिन एस्टरेज का इनहिबिटर रहेगा तो फिर वो एसिटिलकोलिन को क्लीवेज ही नहीं होगा एसिटिलकोलिन का. सो एसिटिलकोलिन यहाँ पे बाउंड रहेगा, राइट, एंड सोडियम का इन्फ्लक्स होते रहेगा, राइट. सो वी विल गिव ड्रग्स विच विल बी एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स लाइक नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन. ओके, सो
You can call them as acetylcholine esterase inhibitors or anti-acetylcholine esterases. So drugs used in the treatment of myasthenia gravis, symptomatic treatment, pyridostigmine, neostigmine. Okay, now we'll get to the root cause. Okay, antibodies were generated against the receptors, but why were these antibodies generated? myasthenia gravis हो ही क्यों रहा था, antibodies generate ही क्यों हुई? Because antibodies are generated by your B cells. B cells को signal दे रहा है T cells. T cells are present in the thymus. Okay, so thymus is the root cause. Thymus में basically either two things can happen. Thymoma होगा और thymic hyperplasia. Thymoma is the cancer of the thymus gland, and thymic hyperplasia is not the cancer, it is just an abnormal enlargement of the thymus gland. But in both these cases क्या होगा? Thymoma and thymic hyperplasia, T cell का abnormal activation होगा and T cell would think कि ये जो acetylcholine के receptors है, these are some antigens and hence it will generate autoantibodies against them. So the main root cause is thymus. In some patients, however, थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेशिया दोनों भी नहीं हुए हैं, बट स्टिल थाइमस का टी सेल का अबनॉर्मल एक्टिवेशन हो गया. ओके, सो आर रूट कॉज इज थाइमस. मतलब अगर हमने इसको ही इम्यूनो सप्रेस कर दिया, सो दैट कैन बी अनदर क्योर. सो इम्यूनो सप्रेशन डिजीज मॉडिफाइंग में यू कैन गिव विद प्रेडनिसोन, अजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन. So basically what will they do? They will work upstream on the immune system, okay? And they will stop the antibody production against the acetylcholine receptors. Okay, so ये root cause पे जा रहा है. Then another is for crisis. Crisis मतलब myasthenia gravis has become so severe that the person is not able to breathe also. So उसमें we need an immediate treatment. Immediate treatment में either IVIG or plasmapheresis can be done. IVIG में basically you will be injecting immunoglobulins, normal immunoglobulins. So वो जो intensity है T cell की abnormal activation की वो dilute हो जाएगी. See, at your level only this is what is taught, but these all are important from clinical perspective. If you will solve clinical cases, these are also mentioned. These thymectomy is also mentioned. Okay, so you need to pay attention. Itna bhi extra it is not there, right? And standard books have mentioned, so there are chances of them being asked in your exams, competitive exams, right? Okay, so IVIG will basically modulate the immune system कि वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स इट विल इंजेक्ट कि वो टी सेल का अबनॉर्मल एक्टिवेशन की इंटेंसिटी को डाइल्यूट कर देगा. अनदर थिंग विच यू कैन डू इज प्लाज्माफेरेसिस. प्लाज्माफेरेसिस में क्या होता है? बेसिकली जो एंटीबॉडीज है दे विल बी फिजिकली रिमूव्ड बाय प्लाज्माफेरेसिस. वो रिमूव करेगा, बट अगेन इट विल बी टेम्पररी बिकॉज दे विल अगेन कम बैक. Plasmapheresis जब तक it is going on, it will remove, physically it will remove the antibodies against the acetylcholine receptors, but again it is temporary because the antibodies will again come back. And T cell, thymus, so it is generating the antibodies. Best treatment is thymectomy, कि thymus gland को ही वो remove. Best treatment. Okay, thymectomy. क्योंकि रूट कॉज वॉज थाइमस ना, थाइमस में अब नॉर्मल टी सेल एक्टिवेशन हुआ था, राइट? ओके, सो अब तक व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन विद माइस्थेनिया ग्रेविस का डेफिनेशन, वी आर डन विद द क्लिनिकल फीचर्स, वी आर डन विद द कॉज, वी आर डन विद द ट्रीटमेंट. नाउ सम बैकग्राउंड कि माइस्थेनिया ग्रेविस इट इज नेवर कंजेनाइटल. ओके, इट इज एन acquired autoimmune disease of the neuromuscular junction. Out of 1 million people, 25 to 125 people will be affected. Problem क्या है? Skeletal muscles get weak and tired easily. Two forms होते हैं myasthenia gravis के, ocular and generalized. Mainly जो first muscle which is affected in myasthenia gravis, those are your ocular muscles. See,
I had explained while telling you that story type of thing ki if you are reading, so your eyes will start drooping. So ocular myasthenia gravis is mainly the first muscle group which is affected. Then generalized myasthenia gravis, बाकी muscles भी affect हो गए. बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है माइस्थेनिया ग्रेविस का, मीनिंग इन विमेन 20s में होता है, मेन में 60s में होता है. ओके, सो वी आर डन विद द बैकग्राउंड ऑल्सो. There's a line from Ganon कि the major structural abnormality in myasthenia gravis is the appearance of sparse, shallow and abnormally wide or absent synaptic clefts in the motor end plate. What does this mean is कि ये तुम्हारा न्यूरॉन था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. न्यूरॉन है और ये तुम्हारा स्केलेटल मसल का मेम्ब्रेन है, राइट? अब क्योंकि ओके, these were your receptors, इनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज आर जनरेटेड, सो वो डिस्ट्रॉय करेगा. एंड रिमेंबर आई हैड मेंशन्ड कि रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने में द मेम्ब्रेन में ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड. तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन भी ऐसी हो जाए, इतना डेप्थ ना रहे. बेसिकली ये इट वॉज हैविंग सच ग्रेट फोल्ड्स, वो थोड़े से शैलो हो जाएंगे. So that is what is mentioned is major structural abnormality in myasthenia gravis is the appearance of sparse, shallow हो गया, yes, and abnormally wide. अब क्योंकि ये shallow हो गया, see, अब ये इतना हो गया, because shallow हो गया तो ये wide हो गया, abnormally wide and absent synaptic clefts. Synaptic clefts here what they mean is इन दोनों के बीच का gap, okay? इन दोनों का क्लेफ्ट विच वॉज सो डीप हैज नाउ बिकम शैलो. एंड समटाइम्स इतना गंदा मेम्ब्रेन डैमेज कैन अकर कि ऐसा यूनिफॉर्मिटी विल बी सीन. सो sparse, shallow and abnormally wider, absent synaptic clefts in the motor end plate. Okay, so yeah, we're done with myasthenia gravis. Hope you have understood. And if you have understood, please like, share and comment. It would really mean a lot if you would subscribe as well. Thanks for watching.